Namaskar, everybody. नमस्कार। आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ जी। Okay. Let's wait for 2 minutes and we'll start. Kuldip ji, namaskar. Not very happy with my vowels pronunciation. Very, Don't worry. very sad. पहले गॉडनी की दो अगर सो रही हो चाहे तो बात क्या करो ऐसे? आज सुचुची एक वगैरह अगर तुझ expectation है उसके कॉटेज तो अच्छा ना मैं वो गॉडनी थी मुझे expect Aisha expectation at the end of the class. Gutu ji से choice करमत first तो Gutu ji को हमने बोल दिया है कि by the end of the class he will speak in Kashmiri. So you will start recognizing every letter, every vowel by the end of the class. I take responsibility for that. So you don't have to worry about that. Perfect. We'll do it together. इसमें आज कोई बात नहीं. तो Thank you. इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज टू सी गुड्डू जी का ये इसकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोला अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, अभी तो आए में ही पड़े हैं, तो आगे देखेंगे, कोई बात नहीं। मैं एंथुसियाज्म इज देयर, एवरीबॉडी हैज, दैट इज नेचुरल। एक बार शुरू करते हैं क्लास तो हो जाता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट। सबको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा फॉर अप टू फोर्थ और फिफ्थ क्लास। फोर्थ फिफ्थ क्लास तक जब तक हम एक बेसिक ये जो वॉवेल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, वो सब थ्रू हो जाएगा। देन व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग देम, फिर सभी को बहुत इजी लगेगा। पक्षुन बाईस में मुश्किल के हैं, देन इट विल बी वेरी इजी। आई एम श्योर एवरीथिंग विल कम वेरी इंशाल्लाह। कंफर्ट। I think let's start. So let's not waste time. Let us go. I'll start sharing the screen and let me see what I have here today. You're able to see my screen? Yes. Okay, give me 1 minute. I'll just bring it a little closer and then. Actually, I have changed my laptop, so I have to get used to a little bit of this thing. Okay, now let's start. जैसे हमने last time बोला था सभी को कि that we start the session with प्रार्थना, and I request today Madhuri ji ko, if you can read this. This is simple Devanagari, so I would suggest you start reading this. Then next time we'll take Guru ji. अभी आप बोल दीजिए माधुरी जी। ओम नमामि त्वं शारदा देवी महाभांगी भगवती कश्मीर पूर्ववासिनी विद्यादायिनी रक्ष माम नमामि त्वं। परफेक्ट। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि महाभागीम ऊपर में डॉट है, भगवतीम है ये ऊपर में डॉट है, एंड पूर्वासनीम करके है, ऐसे देवी में भी है। तो उस वक्त जब आप प्रोनाउंस अगली बार करें तो थोड़ा सा थैंक यू। एंड रिगार्डिंग दैट ललवाक, एनी वॉलंटियर्स फॉर दिस? ईशान? Yes, I can. ईशान, I am on. can you read this lalwak? चलो बुबू से चक्करा कोशिश तक let's see, let's test your Kashmiri. Okay, but am I audible? Yeah, you're audible. Go ahead. I'm a pan sodras navichat laman kati boizi dai myon meti di dei tayar amyan takyan point zan shaman zuchum brahman gargatha. बिल्कुल फर्स्ट क्लास बोला, सिर्फ दिए तार। वेरी गुड, एक्सलेंट। सो आई थिंक यू डन अ फैंटास्टिक जॉब, ग्रेट। सो इट इज शुभ ऑलरेडी हिचमुती चीजें सो रहे वंश both, it is very easy for me now. Which was under student. Then occasion for okay, at least you have done a very good beginning. You made a couple of mistakes, but that is okay, that's all right, it's understandable.
So first thing is that let us do one thing. As I said, today Parul is not there for some reason. I don't know what happened. But I would suggest, चलो माधुरी जी को हमने last time बोला था कि you start the revision of this. You start it. I will not come in between. You start reading this. You can see it my this thing Yeah, I can see your screen. This is my most now. difficult part. क्रिएशन पर भाई हाँ. दिस इज सिंपल देवनागरी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप सीधा पढ़ लीजिए कोई प्रॉब्लम Yeah, I'm actually trying to read the Roman script because नहीं that's यू how I कैन डू would prefer बोथ to write it. या नो प्रॉब्लम यू कैन डू उस बोथ बट हाँ टू स्टार्ट उसमें दिक्कत है. आई थिंक देवनागरी वेरी इजी सो यू हैव टू जस्ट राइट दैट्स ओके परफेक्ट अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अं. हाँ वेरी गुड क ख ग कंसोनेंट्स हाँ क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब य र ल व श श स त्र श नहीं है श स श दूसरा श नहीं है श श स स ह त्र. एंड only thing just you have said everything very correctly just to re-emphasize के इसमें किस तरीके से हम representation करते हैं we'll just go over it again because ये पहला session revision का है तो I will guide you. A is represented by simple A. I is represented by A with a slant line from left to right, on top. So when it is longish sound, as I said last time, ooh, a. So we go from left to right. Okay. When it is small, shorter sound, that is I, ooh, then we go from right to left with a slant. So that is to be understood. So then we'll go I is represented by again I with a dash on the top from right to left, E from left to right, and U again U and O same logic कोई फर्क नहीं इसमें. रे obviously it is R and I. र हमने बोला is represented by R, so it is रे. A A and E together. O O as it is the longest sound again. Ow is slightly different, like I like I. Ow is it is a conjunct of A and E, and here it is A and U. Okay, and it is actually here. Generally हम लोग बोलते हैं, but generally this notation is used as an. न की आवाज नाक से निकलती है अन. Okay, so that's why it is represented by N here. तो लेकिन ये जो देवनागरी में जो मात्राएं हैं वो बिल्कुल वैसी ही जैसे देवनागरी में लिखती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं. नीचे में जैसे आ से कैसे करते हैं, ई कैसे लिखते हैं, ओ कैसे लिखते हैं, ई कैसे लिखते हैं, वो सेम है. री कैसे लिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं. कमिंग बैक टू, अगर हम अभी कॉन्सोनेंट्स में चलेंगे तो क इज रिप्रेजेंटेड बाय की के, ख इज रिप्रेजेंटेड बाय के एंड एच, ग इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, ch is represented by ch, ch by chh, j by j. T is represented by t with a dot at the bottom, and t with a dot in the bottom, and h. And d is represented by d with a dot. So difference between the and d is t has a dot at the bottom and d has a dot in the bottom, and the don't have any dot in the bottom. T, th, and d. Okay. Then let us go to p, f, b. P, f, b. P, f, ph, b, b. Here a lover, Y R L V, which makes sense. As again said last time भी मैंने बोला था कि V का ऐसा है, V का ऐसा है कि sometimes we represent by V, sometimes by W. So don't worry about it. We are not very strict about it, but it can be replaced by that also. Sh by SH, S by S, H by H, and Tra by TR. Tra, T, R. That is Tra. So T and R represented by Tra. Okay. Another thing was that we pronounce all these
ये थोड़ा सा चलो ईशान, कैन यू प्रोनाउंस दिस वॉवेल्स कैसे? वो वीडियो एक हमने लास्ट टाइम ये पढ़े थे, बट बाद में प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया था। एक हमने वो वीडियो डाला था, अगर आपने देखा होगा, वो मास्टर जी का एक ऑडियो था। सो यू कैन जस्ट ट्राई इट, डजंट मैटर, नहीं होगा तो आई विल कम बैक अगेन। गो अहेड। अ अ उ उ ए ओ वेरी ज गुड, वेरी गुड। हाँ, गॉड गॉड। च छ ज Very good. Perfect. So no issue on that. On account that is perfectly all right. So it is u, 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 e, o. Okay. So this is च, z. Perfect. So conjuncts में सिर्फ देवनागरी में representation का ज्यादा important है. That representation is by e with a cap on top or विद स्क्रिप्ट आई, जैसे हमने लास्ट टाइम, जैसे बाकी उसमें देवनागरी में कोई फर्क नहीं है। हमने जैसे सेख पढ़ा था या पोन पढ़ा था, सो दैट इज वेयर दीज आर यूज। सो ये थोड़ा सा वापस वही है। एंड कंजक्ट विद व, उसमें ओ विद अ कैप ऑन टॉप। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओ विद अ कैप ऑन टॉप। ओके, सो दैट इज परफेक्ट। द कॉन्सोनेंट्स इन रोमन, जो हमने बोला था कि हम कौन कौन सा यूज नहीं करते हैं लास्ट टाइम, दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस मिसिंग। लास्ट टाइम हमने उनको रेड में किया था। तो सी मिसिंग है, क्यू मिसिंग है, एक्स मिसिंग है, और कौन सा मिसिंग है? F. F missing है, right? So we don't use those four letters. We do not use this. They are represented by either K, this is C, or S. C is represented by S or K, depending on कि कौन सी sound निकलती है. Or Q is also represented by K because of having sound like K. And F is represented by PH. X we do not use. So that is how it is. So सबको समझने के लिए ये बहुत काफी ठीक है. Okay. Then let us go back to additional consonants in Roman. च, जैसे हमने ऊपर में बोला था, च is represented by CH. ch by CH. D by D with a dot. K with K and H. F with P and H. Sh with S and H. T with T and dot. T with T and dot and H. Th with TH. C with TS, th with TSH, sh with SH, and thr with TR. Okay, that is how it is. So जैसे हमने last time बोला था, we do not use these words gh, jh, ढ, द or bh. We don't use this, and we use only the normal words like g, the, j, b. We do not use it aspirated sound, sonants नहीं use करते हैं, ठीक है? Okay. Then again, we use, this is again that we do not use rna. So Brahmand is simply represented by Brahmand just for representation purposes. So आपके मन में ऐसा कोई सवाल आएगा तो इस तरीके से. So now some illustrations using these vowels. तो आप इसको forget about their meanings. Now I want you to read it, Ishan. Ishan, you are on this thing. You're logged into a system with two different devices. Screens. one is for video, one is for tablet. Achha, no problem, no problem. I was just wondering it, but other two guys have, I don't know, there must be some network problem they have left out. Doesn't matter. So now you read first three, and then I will ask Madhuri ji to read the next three. Go ahead. Lines. Okay. Go ahead. Alam, Vanas, Sadak, Arab, Aram, Saman, Maam, Daman, Bakwas, Patal, Dik, Beer, PCR, वीर, वीर, hold on, hold on. वीर, जी र के नीचे अर्धचंद्र है, नहीं तो यू के ऊपर कैप है. ओके, नेक्स्ट. Beer, BCR, Katij, Bai.
Very good. तो माधुरी जी तो परिमरा मैं तो बाकी तीन. So today, because both of you understand little bit Kashmiri, I will start using Kashmiri. ठीक है? When you ईश्वर शीशम सिर सिन्य seer. सिर Okay. सिर हाँ Seer. सिर Okay. सिर सिन हाँ. सुन नो hold on. सी स ई न आदर चंद ऐसे पढ़ लीजिए आप. बाद में आप नीचे पढ़ लीजिए. एक्चुअली क्या है, ये लॉन्गिश साउंड है. सी विद लॉन्गिश वाला लेफ्ट टू राइट है ना. सी सीन ई न यू विद द कैप इज अ. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू रीड फ्रॉम नो अगर रोमन छुते परा अगर पक्ष देवनागरी तछु देवनागरी वैसे तगा. तगान छुम वाइन खबर कार छुम पोरमुतन मगर तगान छुम Nein, kijk je vooruit. Dus ze ego si n using talkantje ja awa so sin. Okay, next. सीन गरीब Hmm. कानुल कानुल आमुन वातुल गुनुस आनगुन Okay. सुर तूफान खुर Sur. सूर Oh, to je acties in me basan you might be confusing with o. So you have to represent remind yourself to each su o. It is not o. कोई बात नहीं. Go ahead. ओ See, one thing is that just how to pitch him na thoda bahut you can understand. जैसे आमुन छु तलकन छु ना यस ओ छु from right to left. ये जो है ना ये लेफ्ट टू राइट पूरा नीचे तक आता है तो थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो ख्याल में रखेंगे तो अच्छा रहेगा. मैंने सूर तूफान खुर and it should be खूर खूर खूर. वफ- हाँ. खूर वफूर फ्यूर Pure again. फ्यूर Very important because there are तोय छु वायरा कोशर तगन तो छु तमकिनस ना माइंडस मस आसान दोयम लफ्ज तोय छु सिर्फ परन येती ये छु न बोल बुझन कि मे क्या छु तगन ये छु वेरी सिर्फ ट्रू यहोय परन सूर तूफान खूर वफूर वफूर फ्यूर फ्यूर. Very good. कैन आई Very डू good. दैट अगेन प्लीज Yeah, sure. त्रानवे लाइन Ah, sure, Ahmed. ईश्वर शीशम सिर सिन सीन सीन इज Seen, करेक्ट सीन seen. सीन सीन हाँ. गरीब कानुल आमुन वातुल गुनुस आनगुन सूर तूफान खूर वफूर फ्यूर Very good. अच्छा Very good. दिस इज फ्यूर Perfect. गुस्सा आया अच्छा Yeah, फ्यूर मतलब yeah. बैड Ishan, you do first three again. Okay. ऋषि पृथ कृत शम शमशेर मेनुन रेशल मेठुन ब्रेठुन डैडी गैर वैकुंठ कोले कोल Kolai. कोल Kolai. Hi. कोल Die. Actually, daddy generally shouldn't kosher lafaz ke, but colloquially we are using it generally. Daddy का रस्म से. गैर she use करा why couldn't I. तवाइचे तलक basically इसका representation ज्यादा देखना है कि तलकंची A E sit and you use represent करो. So that you have to remember both of them. ठीक है. Next. हाँ बोलिए. तोल बोलुन ब्रोर पुलहोर तुलोन गौ तौलिया दौलत आंगुन गाँव. गौ हाँ. गौ तौलिया दौलत दावत. आंगुन इसे. Okay. Go ahead. आंगुन प्यूत कुंज गंदुक सेक टेक चेत हेक बेल Very good. माधुरी जी तो इतने पेरे मारा एक तोल बोलुन ब्रोर पुलहोर तुलोन
गाओ तौलिया दौलत आंगुन प्यूंत कुंज गंदुक स्याक दैक चेत हैक बेल बेल Ako çeşit ki içine memory must ban ki meşi meaning is but içu actually içu sorry paron buçet. Reason being ki taşo kaşır tagan. But agar na is biçe ki person şu represent kayıt kasan, then the purpose of this lesson will be lost. So I would suggest that you read that word slowly in the sense ki kut potential represent. So make an Okay. image of this in your mind again. Tall. I shouldn't wanna use the zor shouldn't wanna, but the idea is to emphasize on what we are trying to do. Okay? Okay. तोल हाँ बोलून just 1 minute one. हाँ हाँ जी ईशरा जी आप कुछ हैंड रेज क्यों किया आपने? Sir, can ईशिरा you जी please keep hello? या Sir, can you please keep the medium of instruction English or Hindi now? pardon? Can you please keep the medium of instruction English or Hindi for now? मतलब आप जो नहीं एक्चुअली कश्मीरी में आई कैन डू दैट बिकॉज द बोथ अभी तक आपने अभी ज्वाइन किया तो अभी तक जो दोनों थे वो नहीं नहीं कश्मीरी मैंने 10 ज्वाइन कर लिया था और नहीं आई कुड नॉट सी यू ऑन माय स्क्रीन आई एम सीइंग यू नाउ नो प्रॉब्लम so there आई are विल I will use both. I will use both. No problem. Don't worry. ठीक है. okay गुड्डू जी okay भी थोड़ा लॉग ऑफ हुए थे अभी वापस ज्वाइन किए तो कोई बात नहीं. तो ठीक है. So let's go ahead. ठीक है माधुरी जी. So all purposely what we need to do is that we need to emphasize on these vowels in the sense कि so that we understand them properly. ठीक है ना ठीक तरीके से हमको समझ में आए. बोल बोलुन okay. bro. Not that we have to every time use this way, but just to understand this properly. Pull hore to loan. Idea is to understand O. And similarly, ao, gao, taulia, daulat. Okay? Yeah. So that is how it is. Then angun. आंगुन हाँ प्यूंत पहले yeah प्यूंत कुंज yeah गंदुक So again, here what Devanagari is very clear. There is nothing, no issue there. But so long as Roman is script is concerned, again remember, is A with the left to right asterisk on the top, on the line on the top, and when it is O, then it is from right to left. right to left. Okay, so the shorter sound is right to left, and longer sound is left to right. Left. So this will hold true everywhere, whichever letter we use, whichever consonant we use. Okay. So angun, pyunt, प्यूंत kunz. कुंज So here ganduk, गंदुक kh small. is kh. So here Ganduk. for Roman especially it is kh. Rest everything is very clear. And go ahead next line. सैक दैक चेत चेत हैक बेल Okay. Okay. Very good. अजय जी आपने कुछ रेज किया हैंड. अजय जी. कुलदीप जी मैं ये पूछना चाहता था कि हाँ लास्ट टाइम आपने बताया था कि जो हिंदी में जैसे आधा होता है ना स आधा य स्या स्याही का एग्जाम्पल दिया था. तो कश्मीरी में सेकंड वाले को पहले मतलब ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, जैसे य को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है. नहीं मैंने उल्टा बोला था. नहीं जैसे Actually, एक मिनट. Let me complete. See, if it is Devanagari, when you use any conjunct, first is always pronoun. First letter is always which is a curtailed letter. उसको हम कम आवाज देते हैं और लास्ट वाले को ज्यादा करते हैं. ठीक है ना. बट so far as Kashmiri is concerned, it is slightly different. हम स को ज्यादा यहाँ एम्फेसिस करते हैं, य को कम करते हैं. That is what I said. So come back. हो गया है ना. हाँ तो हाँ इस एग्जाम्पल को देखते हुए मैं आपका पीछे वाला था ना वहां पर उसमें प और य यूज किया था. which one? Please tell me which one. अब इसमें मैं वापस तो नहीं जा सकता हूँ. आप
नहीं नहीं, you tell me where, which I can go back. You don't have हाँ, to नहीं go. नहीं, You tell me where. आप पीछे जाइए 1 मिनट। I'm wherever you tell me. Go ahead, Marsh. Tell me. ये जैसे फ्यूर, बस यही फ्यूर। Hey, but here emphasis is on you. You're no. Here it is. Here it is. Emphasis is on you and not here. It is not a conjunct. So fure. It is तो वो here. It is here. Let me complete. See, यहाँ we are trying to emphasize on the vowel oo, you. Also, that is why it is emphasized here. It is emphasis on you. But general conjunct में ये बात कर रहा हूँ मैं, where it is basically a join. This is जहाँ पर conjunct of जैसे consonants है. So here it is this is as a vowel here. As a vowel को हम लोग emphasize करना ही है. Am I right? Am I making sense or? अच्छा, इट डजंट मीन कि वो हिंदी देवनागरी में आधा है या हलंत वाला है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे नहीं, मुझे मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे अभी सेक है, अभी या अगर हम देवनागरी में जनरली पढ़ेंगे तो हम यू वुड रीड इट एज सयक। करेक्ट, that is the correct pronunciation of it if we read it in Devanagari. It is not sek. If it is in Devanagari, then we will read it as sayak. जी So that is why, to make my understanding a little clear for everybody, that's why I said this. No problem. We'll go further, and if you have any more queries, we'll go ahead. ठीक है? कुलदीप जी, can you show the हाँ, self, उमेश जी। like, हाँ जी, एक बार आप self दिखाएंगे, because I'm not able to देवनागरी understand. I'm not able to hear you properly. नेक्स्ट पेज पे आप नेक्स्ट पेज पढ़ कैसे हाँ, okay. हाँ स्याक कच्छ Go ahead. स्याक इधर स्याक हाँ जी, नीचे। अच्छा, okay. नीचे थोड़ा बहुत हाँ, बोलिए। आगे। हाँ, ये नहीं है, लाइक इफ दिस इज नॉट अ ईयर। अगर आप देखेंगे यहाँ ईयर नहीं है, मतलब ये बाकियों के लिए है। आई एम टेलिंग दिस इज नॉट अ ईयर, दिस इज अ वोवल जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईयर से। तो हिंदी में जैसे भी बोले, इट्स नॉट अ ईयर, इट्स अ वोवल। ये आधा स्मॉल वोवल है, इट्स लघु वोवल स्यक। या तो उमेश जी, अगर एक रिक्वेस्ट है। See, one thing is there. Let me make it clear for everybody who's in the class. There are two versions of teaching Kashmiri. There were two standards. Let me tell you, since Umesh ji raised this point, so let me clarify. There was a committee which was formed by a group called Zan, who made this Devanagari script. Later on, another group after 2006 or 2009, I don't remember exactly, standard was changed a little bit, where even the representation is different. And that is what Umesh is referring to. ये वोवल है, ये कंसोनेंट नहीं है। ये हम लोग इसको ये हाँ, वही तो मैंने अजय जी को वही पहले समझाया था कि यहाँ पर एज अ वॉवल यूज करते हैं, तो जहाँ एज अ वॉवल यूज करते हैं वहां पर वो कम साउंड आती है ये। हाँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, उस बाकियों के लिए कह रहा हूँ कि दिस इज अ वोवल। आप लोग, हम प्रॉब्लम क्या आ रही है, वी सी हियर एंड वी गो स्याक स य ख। It's not here. That's perfectly all right. That is perfectly all right, Mara. So let us proceed with the lesson, so that otherwise we cannot conclude this lesson. We'll have to sort of give a halt to this discussion. We can have a discussion at the end of this. No problem. Otherwise we'll lose track of our this. Okay. Now Ajay ji, now you can read these next two lines. Can you see it? या फिर गिर तुर जूर नीर। This is what I'm saying, Ajay ji. Now you read it with Devanagari, so you are writing य का पूरा आप बोलते हो, but जब हम कश्मीरी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, so actually tell you frankly, because ये मास्टर जी का रैना साहब का बनाया हुआ है, if I were to write it, I would always put a halant on य.
Yes. So because this is a standard that has been done, I cannot fiddle with the standard as it is. I have no authority to do that. But ideally, it should have a halant on this. So it is not fear, it is fear. Fear. Here is only in your mouth. Fear, gear, tour, your, need. समझ में आया? This is what I was telling the difference between. हाँ. Can you read it again, please? Fear, gear, tour, jur, noor. Neer. नहीं, again. Let me come back. So listen to me very carefully, slowly. एक मिनट. Fear, यह खाली आपके मतलब लास्ट में दिखना चाहिए, मतलब ऐसा बोलना नहीं उसको. Fear, gear, tour, your, need. अगर आप यह पूरा थोड़ा सा भी ज्यादा बताएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है. दैट इज हाउ इट इज एक्चुअली स्पोकन इन देवनागरी. इफ यू वुड हैव रिटन देवनागरी, इट इज कश्मीरी. दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो ओके, नो प्रॉब्लम. विल गो अहेड विद दिस. गो टू द नेक्स्ट लाइन. नहीं, पर इसमें जैसे जूर और मीर है, जूर और मीर, तो उसमें रोमन में जूर में तो यू लिखा है और नीर में यू, दोनों में नहीं, यू है. hold on. Here it is conjunct with year. Basically, tur it is oo, the oo. That what you are seeing is you. Roman में you तो oo की आवाज है, लंबी आवाज है. Okay, it's a longish sound. So far as r and y is concerned, which is a conjunct of y at the end, there it is always represented by a superscript I, as you are seeing in all these words. What I am saying is कि तूर और जूर में तो रोमन में यू विद लेफ्ट टू राइट है. हाँ. और देवनागरी वाले में नीर में भी वही चीज लिखी हुई है, तो वहां पर आई नहीं होना चाहिए. कहाँ पर? नीर के नीचे रोमन में. हाँ, okay, हाँ, this is a mistake. Yeah, right. I got it. This is a mistake. This is a representation. This is need. This should be corrected. Got it. Thank you for okay, go ahead. I will check this. Parimaru, can you read the next line? For joy, lokut, mokul. Very good. I will just again say it. ये यू ओ विद अ कैप जो है उसको बोलने में थोड़ा वो आवाज की आवाज है. खर, जॉय, लॉकुट, कोकुर, मोकुल. So थोड़ा roundish आवाज मुंह को थोड़ा, you have to make it little roundish. So then you can get it. Isha ji, can you read these two lines again for me? Fear, gear, tour, jur, neer, khor. Again, Ishra ji, if you are speaking as if there is no year, if it was in Devanagari, it was written f e or r khali, या ग ई और र खली, या तू त उ और र खली, वैसा आप आवाज निकालो. फी गु नो, फीर गु नहीं, फीर. Repeat with me. No, don't worry. That's the part of this lesson. So feed. You have to have year has to be very silent, very small, effect of year on that. Feed. Please repeat with me. Fear. Same way. Gear. Word. Gear. Tour. Jur. Need. Neer. No problem. No problem. You will get there. Don't worry. It's very easy. But first time, it's a good attempt. So let us go ahead. Like again, जैसे अजय जी ने भी पढ़ा, मैं again I will say just khor, joy, lockwood. So make your mouth a little roundish. Lockwood, cockwood, mockwood. So when you do this, representation is in Roman is with a O with a cap on top. Okay, and as we see, t is represented by t with a dot,
Kh is represented with K and H, and rest it is as it is. Okay. So any other questions at this time? Ajay ji, Umesh ji, anything? Madhuri ji, anything? Or Ishira ji? Anybody has any question accepting this mistake? Which we have anything Sometimes else? sometimes it's easier to read it in Devanagari, sometimes it's easier to read it in the Roman script. So I think Perfect. You know we are what? See what my experience has been while learning is that if it is only Devanagari direct, it is much easier to read in Devanagari. But wherever when we are having those special vowels involved, their representation by Roman is much easier to understand once you understand the sound, how it is pronounced. So it becomes much easier. Definitely. Anything, Ajay ji? Anything? गुरटू जी, आपका नेटवर्क आता जाता रहता है, क्या बात है? सब ठीक ठाक है? मैं ये पूछ रहा था कि हिंदी में आप जूर में या भी है और अंग्रेजी में आर के आगे ऊपर आई है, तो यहाँ वाई क्यों नहीं है? नहीं, वो अभी वो उसमें हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये स्टैंडर्ड ऐसा ही है. सो एज ए जैसे मैंने आपको बोला था जेड कैसे लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस. ये ऐसा क्यों करते हैं वो नहीं करना है, अभी ऐसा लिखते हैं करके ये याद रखना है. अच्छा, ओके ठीक ठीक, ओके. धन्यवाद जैसे धन्यवाद. ए कैसे हम लिखते हैं, हमने देखा ए कैसे लिखते हैं तो हम उसको ए ही पढ़ते हैं. ऐसे हमको ठीक यहाँ ये याद रखना है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा. ठीक है, ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम, नो नहीं, हाँ, प्रॉब्लम ओके सर, ओके. नो प्रॉब्लम. धन्यवाद ओके, धन्यवाद. नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम. सो I would suggest that you go through this and we'll go this. Last time हमने अ और आ के दो वर्ड पूरे किए थे. Now today what we'll do? Today we will do अ अ अ. These four vowels जो special vowels हैं कश्मीरी में. When we write Kashmiri in Devanagari or in Roman, these are four special vowels. Now what we have done, like last time हमने देखा था, after जितने भी हमने अभी जो special vowels हैं आप देख लेंगे. What we have given a guide word. First word is a guide word, which we said guide word means every time you see this symbol, you should understand this pronunciation. Okay, so it becomes much easier. So first is a. It is represented by A with the circle on top. गोटू जी, आपने डॉट लिखा था, ये एक्चुअली आपको शायद दिखता नहीं होगा बराबर, छोटे कैमरा में देखते होंगे या किधर देखते होंगे. ये ए के ऊपर सर्कल है, नॉट डॉट, और अ के ऊपर अर्धचंद्र है. ओके, आपने ग्रुप में कुछ लिखा था इसलिए मेरे को थोड़ा ध्यान आ रहा है, इसलिए मैं आपको जस्ट बताऊं. सो हियर इट इज अच is represented by A with a circle on top, and छ CHH, छ हमने ऑलरेडी सीख लिया, छ हम रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए. सो I will go through these words first, and then we will rehearse again. Ach. So whenever you see any letter with a on the circle, Ardhachandra on top or A with a circle on top, so should naturally come to your mind. Okay, जैसे gar, vari, nar, var, var, dar, dar, ans, kats, sa. Now here if you see equivalent of Roman जो पहले लिखा है, च is represented by T and S, so you have to remember. But A with a circle on top is represented of a. Sir, if it was only A, it was not, we didn't have a circle on top, we would read this, हम ऐसे पढ़ते sir. ओके, सर पढ़ते हम. अगर जैसे देवनागरी में भी अगर अर्धचंद्र नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते सर. सो जो ही अपने ऊपर में अर्धचंद्र देखा या ए के ऊपर सर्कल देखा, सो वी हैव टू रिमेंबर इट इज अ. सर, गर, वरी, नर, वर, दर, अंस, कत्स, सर. लेट्स डू रिहर्स वन बाय वन. तो गुरटू जी आप पहले दो पढ़ लीजिए, दो दो पढ़ेंगे सब. आप अपना अपना बंद कर, ये आपका म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट कर दीजिए अपने. हाँ, अभी बोल दीजिए. अठ, गढ़, हाँ
वरि, वेरी नर, ओके वर, दर, अज, कच, कच्च, कच्च, चर, चर। एक मिनट, एक मिनट गुड्डू जी, आपको मैंने लास्ट टाइम बोला आपका आपने संस्कृत पढ़ी है, सो हम हाँ, आप अगर र को एम्फसाइज पूरा करते हैं, हमको देवनागरी की तरह पढ़ना है, संस्कृत की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सो अच्छा, जैसे गर नहीं पढ़ना है, गर पढ़ना है, वरी नहीं पढ़ना है, वरी, ठीक है, नर नहीं पढ़ना है, नर पढ़ना है, ठीक है। सो ये थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लीजिए अपने, जब आप ये क्लास के बाद, तो वी विल डू इट अगेन। सो अभी आई वुड सजेस्ट ईशिरा जी, आप प्लीज गो थ्रू दिस ऑल दिस वर्ड्स, कैन यू रिसाइट फॉर मी? गर, वर, नर, वर, दर, अंस, कच, चर। वेरी गुड। एक्सेप्टिंग वो वरी है, जैसे आई का ऊपर में सुपरस्क्रिप्ट है, तो उस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट नहीं, मतलब लेफ्ट और राइट लाइन है जो ऊपर वाला, वो थोड़ा ध्यान रखना। इट इज अ लॉन्ग सब ई, वरी, ओके, परफेक्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। अजय जी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा? अच्छा, गर, वरी, नर, वर, दर, अंस, कच, सर। वेरी गुड, कच, सर, वेरी गुड, परफेक्ट। So let's very good. You have read everything correctly now. So we will get used to this. We'll need a little more practice, no problem. So this is first vowel, special vowel, which is represented by a, which is represented by a with a ardhachandra and or a with a circle on top. Now we go with a. It is the longest sound of a only. It's the longest sound of a. Like a, like this same way, a. Okay. So again, guide word here is merge. Like हमने guide word a का देखा, ach. Always we have to remember ach means I. Ach, ach. Merge means mother. So we have to remember this. So merge, dar, kar, var, dan, ash, us, her, ler, varis. Again, once I will read it again, then we'll go one by one. Merge. So this is represented by A with Ardhachandra. It is A with Ardhachandra. A with Ardhachandra, or in Roman, it is represented by A with double dot on top. Okay. Merge, the, कर, वर, दन, अश, अस, हर, लर, waris. Okay. So let's just start with Ajay Kolji's time. Ajay ji बताइए. मर्ज, दर, कर, वर, दन, आर, अश, आस, हार, लार, वारिस। नहीं, दो तीन जगह गलती हो गया. आर नहीं, आर अगर ऐसा होता है, अगर देवनागरी में हम पढ़ते हैं तो आ और खाली होता है, तो इसमें ऊपर में अर्ध चंद्र है, दैट इज द डिफरेंस. अगर इफ इट वाज ओनली इन रोमन कॉरस्पॉन्डिंगली, इफ इट वाज ओनली ए एंड आर, आई कैन अंडरस्टैंड इट इज, और विद द लॉन्गेस्ट asterisk on top. So basically it is same way it is us, not us, us. Similarly her, then and were is very good. Perfect. गुरु जी आप पढ़ लीजिए अभी. गुरु जी पढ़ लीजिए. अच्छा, आपको दिख रहा है बराबर? हाँ नहीं, दिख रहा आप हाँ, आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए. मार्ज, दार, कार, वार, दान, अगेन गुरु जी, औस, मर्ज नहीं, मर्ज. आस,
हार लार वारिस। अगेन गुड टू जी दैट यू हैव टू, आपको थोड़ा ऑफ टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। र पूरा नहीं बोलना है, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं वैसा नहीं पढ़ना है। दर पढ़ना है, कर पढ़ना है, दर नहीं पढ़ना है, कर नहीं पढ़ना है, वर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है, दन पढ़ना है। ओके, सो आप वो बाद में प्रैक्टिस कर दीजिए। ईश्वरा जी, कैन यू प्लीज रीड ऑल दिस वर्ड्स अगेन? माज लार हार नहीं, ईश्वरा जी आप नहीं, गुड्डू जी थोड़ा वेट कीजिए। ईश्वरा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बर द क बर द आपकी बर आवाज कट रही है मैडम। और अश ओस अस हर वरिस। वेरी गुड। सो आई थिंक एक ही जगह थोड़ा सा आई कुड नॉट हियर बिकॉज बीच में कट गया था। लर, इफ यू आर प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, सो बीच में कट गया था तो लर, जैसे आपने हर पढ़ा बराबर पढ़ा, अश पढ़ा, अर पढ़ा, वेरी गुड। सो वी आर गेटिंग देयर, गुड। सो दीज टू vowels we have finished and we come to the third vowel. Now it is like we have o, o. These are special vowels for Kashmiri, and The first one is represented by with the ardhachandra at the bottom, niche, and u with a cap on top. So this is uh. So इसका guide word है b, which means me. B, च, charab, patij, khar, gur, kal, Muslim. मसल, वार वार, नरम। ओके, म, अ, च, च, ब, च अगर वो छोड़ेंगे र, पतेज में त, खर, गर, ल, कल में कल, ल, म, ल, मसल, वार वार, naram. Okay, everywhere it is so that we have to remember this. So we'll go again. Ishara ji, this time you start with it and then we go with Madhuri ji. हाँ बोली Madhuri. Muslim में both the U's don't sound the same. Do they sound the same when you say it? Could you repeat that, please? Musl, musl, Muslim. masl. Okay. Okay. Thank you. Actually, I know why you are having a little doubt on this. When we speak in Kashmiri generally, जिसको पता है, हम मसल बोलते हैं. We do not emphasize. We are so fast in this. We do not read exactly as it should be. Muscle. This word is muscle. But when we speak, fast, muscle. So we are not able to distinguish m and l. So that's why it may be different. Go ahead, Ishra ji. ब च चरब पतज खर गर Khar. कर सॉरी Yeah, go ahead. Khar. गर कल मसल वार वार नरम। तो जगह थोड़ा गलती होगी. Khar and gur. 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 माधुरी जी आप बोलिए अभी. B, S, Charab, Patuj, Khur, Gur, Kal, Musl, Var, Narum. Narum. Very good. Very good. अजय जी. ब स चर पतज ख ग काल मसल वार वार नरम.
आई थिंक मेरे को आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, तो लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा वार वार है, मतलब बिकॉज ये आ की आवाज है ना, जी, वार वार। आई डोंट बार नो, आई डेंट। बार हाँ, दैट इज बार वेरी गुड। नरम नरम, यू सेड नरम पतिज चरब। पत्ते 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 पतिज चरब, वेरी गुड। गुड्डू जी आप पढ़ लीजिए। ग च चरब मतज खर गर कल मसल वार वार नरम। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी चेंज हो गया अभी, काफी बराबर हो रहा, स्मूथ हो रहा अभी। जो धन्यवाद आप लास्ट धन्यवाद। वाला जो ठीक नहीं हो रहा था, थोड़ा काफी ठीक हो गया। ओके, now let us go to the last one of today's vowels which we have planned for today. Now this is, instead of it is it is the longest sound of like we have we have so this is now, guide word here it is tur. So whenever you see with a double chandra on bottom, or you find u with a double dot on top, you must immediately strike this word. It must come to your mind. Tur. It is tur. So when this comes, so everything else becomes easy. So I will read the rest of the words. Duf, purit, utim, punchim, ungat, kunk, kum, suit, tunk. Now I am making it little more pronounced for your understanding. Otherwise, if it was normally read, tur, the, purit, utim, punchim, gungat, kunk, kum, suit, tunk. So this is how we would write. So understand करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि that ये उ या उ की कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें उ अ और हम कर रहे हैं और सो ये याद रखना है। अजय जी आप पढ़ेंगे ये सारा वापस? the purit thim पंचिम गट सुत सुत यह नहीं होगा ना, सुत। So here again, I think यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। सूत, जब ये त और य का कंजंक्शन हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें थोड़ा य पे कम एम्फेसिस करना है, मतलब त पर ज्यादा सूत, त का करना है ये, हाँ सूत, और टंक ये नहीं पढ़ना है, या सूत नहीं पढ़ना है, ठीक है? सूत टंक। सुत वेरी गुड, वेरी गुड मैन, फैंटास्टिक। गुड्डू जी आप पढ़ लीजिए अभी। Sorry, one question again, please. हाँ वही नंबर है, वही नंबर, श्योर श्योर। आपने बोला when I superscript is there, then you have to put the emphasis on what is with it. So suit, right? तो पर ज्यादा है, यह बहुत कम आएगा। हाँ हमेशा मैंने ठीक है। बोला पहला वर्ड, हाँ सूच ऐसे सेम है। But then टंक, क क पर ज्यादा है, क पर ज्यादा आवाज है, और यह कम ही है। okay, okay, ठीक है ना? sorry. Yeah. No, no problem. We are in the class. Whatever doubts are there, I think unless we clarify them, they'll not go away. So no problem. You can always interject. No issue. Thank you. गुड्डू जी बोलिए, ये सारा पढ़ लीजिए आप, गुड्डू जी। तर जप परिद अठिम पंचम गुंडगट खुंख खुमो सत्य संख्य। अगेन लिटिल डिफरेंट, जिस टाइम आपने काफी ठीक किया, लेकिन तर दफ नहीं, दफ। ओके, आप थोड़ा सा वापस प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। माधुरी जी तो पेरे में Tur, duf, purit. पूरित, अगेन इट इज नॉट पू। Yeah, it's दिस इज अ the जनरल मिस्टेक हम करते हैं, कोई बात नहीं। दैट्स व्हाई आई एम इंटरजेक्टिंग हियर। नॉर्मली आई वुड हैव अलाउड यू टू स्पीक। इट्स नॉट पूरित, देन इट वुड बी ऊ।
Then it will be oo. It is not oo. It is Purit. Okay, go ahead. Purit, Purit, Otim, Punsim, Gungat, घूंघट न चले ऐसे ग ऊ होता फिर या जी यू विद अ लॉन्गिश साउंड ऊपर एस्ट्रिक होता नहीं घूंघट नहीं Gungat, घूंघट Gungat, घूंघट Gungat, Conk, Com, Com, Suit, Tank. ना एक मिनट खम अगेन म के नीचे अर्धचंद्र है वो अभी जो हमने उससे पहले पढ़ा है सो दैट इज खम एंड लास्ट में ट अगेन ट ट के नीचे डबल अर्धचंद्र है या टी के पर टी डॉट के साथ में यू विद डबल डॉट है तो ट और जो के साथ में सुपरस्क्रिप्ट है तो इट इज साउंड इज tung. Yeah. Okay. So, who is left out? Ishara ji, you are left out. Go ahead. Ishara Tur, ji. tur, purit, autumn, pancham, gungat, khak, khamma, satya. I don't know how to pronounce last one. Suit. No problem. You again keep trying. Don't worry. Don't worry. You will get it there. No problem. Suit. Yes. Suit. Tooth, Good. tongue. Tung. Okay. So I think थोड़ा सा मेरे को पता नहीं आवाज तो आपका बीच बीच में कभी कट रहा है तो just put it, just do. Okay. Put him. So perfect. No issue. So I think we have done today these four more जो special vowels हैं इसमें वो हमने पढ़ लिए. So what you need to do is that as you saw last time, तो इसका जो PDF होगा, it will be posted on the group by the end of the class, and also what you need to do again, you have to recite that poem. Now, one of the words which is in Renge Mali is Purit, which we have studied today. Purit Shirit, if you remember that word. Renge Malun Purit Shirit. Bedecked, she was bedecked. So I'm not getting into meeting right now. I want you to, we'll get into the meeting. It is a very, very nice rhyme. So we'll go into that later on. But that I was just trying to remind you that उसमें भी word एक पूरित है. So that we have studied today. And there are rain, rain गई मालूम. पहला वाला जो आज हमने स्पेशल वॉवल पढ़ा rain गई मालूम. So it is with a with the ardhachandra on top, Range Malan. So you can now represent, now you can start thinking that वो जो Range Malan में लिखा है वो हमने चार आज स्पेशल वॉवल पढ़े, so you will make more sense of those. जो आप अगर वो पढ़ेंगे आपको, you will make more sense of it कि किस तरीके से होता है. Okay, so I think that is good. Then recite the sounds of vowels. This is your class. These आज ये चार जो हमने पढ़े, that you have to do. Then read and write at least 5 words for these vowels. वो आप 5 वर्ड जितने भी वर्ड्स आपने इसमें देखे वो आप राइट कर लीजिए. आई वुड सजेस्ट आप राइट भी कीजिए एंड प्रोनाउंस देम आल्सो. तो प्रोनाउंस भी करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द साउंड प्रॉपरली कि क्या हम पढ़ रहे हैं. तो क्लासरूम में जैसे लास्ट टाइम डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन पोस्टिंग इन द गूगल क्लासरूम? नो. So you can go ahead. If you have any issue, please post it on the group. So it will be corrected. तो बाकी तो आपको पता है कि कैसे हम evaluation कैसे करते हैं. I will not keep repeating it every time. So evaluation will come later on. Now, can you read this, Madhuri ji, understanding what we studied today, some of the vowels. Can you just read it? Okay, can you show me the Roman version, please? Roman, okay, no problem. तो आधा ही है. Sure, no problem. Dashwech version, दोनों version है. Please see. Ringai Malyun. 1 second. हाँ. Purit Shirit Myanis Berthus Bay Luj Her Kuta Bari Ko Ak Kharak Valbe Panas Khavat Var. Here only thing is that again,
No problem, no problem. The purpose is to just understand what we are doing. So here it is rain, right? आवाज है जहां पर भी आपने देखा a with a circle on top. Same way, be ludge, not lodge. Ludge, her, not her, her. Same way, bird, not bird, bird. अ आवाज आनी चाहिए मतलब it should be seen to be there. Bird and ver last में ख्यावत ver. So that is a special vowel because that and the word which you could not recite properly was जो हमने last में पढ़ा purit, not purit, purit shirit. Okay. Anybody else on this point? Then Umesh has raised a hand. Then we'll answer his query. Anything else? मैं एक बार Anybody? बोलता हूँ, हाँ जरूर बोलिए सर. रन्य गाय माल्युन औरत शीरित म्यान सुबाथस बै लरहर कूताह बर को अख खारक व्यल बेह पानस ख्यावत वर. वेरी गुड अटेम्प्ट गुट्टू जी, बहुत अच्छा हो गया. थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा हम करेंगे तो मेरे को और अच्छा ये लगा कि आपने इसको सच में गाया, आपने पढ़ा नहीं उसको. कोशिश करेंगे गई साहब. माँ. वेरी गुड वेरी गुड. वो मतलब जो ऑडियो ग्रुप पर आया उसका आपने पूरा फायदा उठाया है. आई एम वेरी हैप्पी एंड इट गिव्स कलर टू दिस क्लास. थैंक यू गुट्टू जी. सो नाउ उमेश जी, थैंक यू. यू हैव रेज्ड अ क्वेश्चन, यू हैव रेज्ड अ हैंड. उमेश जी कोई नहीं मरा. हमारा I couldn't upload anything to the class. पता नहीं last. Please do it immediately. So you may not get full marks, but at least you will get something. So I would suggest that please do that. I have a request to everybody. See, doesn't matter whether you are correct or wrong or you are not perfect. We don't expect you to be perfect. That's why we are in the class. Even I am not perfect after conducting 3-4 years of class and before that learning myself. So don't worry about that. So we will have our imperfections, but we are not perfect. Nobody is perfect in this world. Perfect is only if there is anybody, that is God. So we are all fallible and we can make mistakes even when we understand everything. So no problem. So, but I would request everybody, आप सब जो भी homework है, it doesn't take more than half an hour, as I told you. Now you must have seen that yourself. एक बार किया तो आधे घंटे से ज्यादा काम नहीं लगता है. अगर सेम डे करेंगे तो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि पता चलता है कि कोई मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट करने का भी टाइम मिल जाता है. And plus, when you post it, Kusumji will keep correcting you and keep sending you her comments, and that will help you also. ठीक माना? ना हमारा homework करूँ पूरा upload गावना. अच्छा तो कोई डिफिकल्टी है कोई करने में? हाँ upload अच्छी difficulty. upload छुस काना error युआन. No, एक काम कीजिए, because what I would suggest that you talk to Parul offline, or yeah, you put for a change, for one exception we will make for you. जो आपने homework किया है, you send it to me or Shivani ji. We will try to help you put it there, and in the meantime we will Okay. teach you so that next time you don't have that difficulty. Okay? Okay. ठीक है माना? No हाँ problem. very You have much. done, there is no problem. So it's a question of any difficulties there. That's initially कोई teething trouble आएंगे, कोई problem नहीं. We'll handle it. Don't worry. Don't worry, sir. कुलदीप जी, Anybody else has any? एक हाँ, बोलिए रिक्वेस्ट है, if you have the time, can you just pronounce all those words once? Because Which I'm one? recording them, all of them, all the ये तो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी all- हो ही गया ना. ये रिकॉर्डिंग अभी आएगा आपके ये पास. रिकॉर्डिंग बाद में आती है. अब भी होमवर्क कर रहा है, अभी राइट कर रहा है. which ones you want me to recite? all बोलिए. all of them. आपको तो 2 मिनट लगेगा, प्लीज. all the अरे 4 नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं, no problem. I'll take 5 minutes. All the 4 ना, no problem. if you आज के don't जितने थे. नहीं हाँ. नहीं, no problem. There's no mind. So let me do once again. Ach, gar, vari, nar, var, dar, ans, kats, sir. This is the a part. A, maj, dar, kar, var, dan, ar, ash, as,
her, ler, veris. These are two. Third one, again in the category of u, b, s, charab, pataj, khur, gur, kal, musl, var, naram. Okay, this is Then we go to the last one, which is again category of u, tur, dup, purit, utim, punchim, gungat, khunk, khum, suit, टंक. ईश्वरा जी आपके लिए भी खसूट टंक. Okay, perfect. So I think anybody else says anything? Otherwise, I will close the lesson. Then I will still have some 2 minutes for any discussion. Anything? Anybody? Anything? Ishan, you have anything? आपको कुछ बोलना है बेटा? हाँ जी, मुझे एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो ये कि जब इंग्लिश में लिखते हैं, रोमन में ड लिखते हैं, जैसे डल डल लेक वाला ड, तो उसमें डी के नीचे डॉट आता है, पर जैसे हिंदी में ड के भी नीचे जब डॉट आता है तो वो ड़ बन वो जाता हम है. यूज वो हम नहीं यूज करते हैं. वी होता डोंट ही यूज एनीथिंग. जो आपके लेसन में लिखे हैं ना, वही हम यूज करते हैं. बाकी बहुत सारे जैसे न्य भी है, ड भी है, दूसरे देर आर वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ड ऑल्सो. देर आर 3-4 तरीके हैं. ड भी है, ड विद अ डॉट ऑल्सो. एक जैसे सर्कल जैसा एंड में रहता है, वो हम यूज नहीं करते हैं, कोई भी नहीं. किसी भी लेटर में हम एक्सेप्टिंग स ज में, जिसमें हम डॉट नीचे यूज करते हैं, बाकी कहीं यूज नहीं करते. तो बहुत जगह तो ग में भी यूज करते हैं, ध में भी यूज करते हैं. सो फॉरगेट अबाउट थिंग. इन दिस हम लोग सिर्फ स, छ और ज में यूज करते हैं, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल. ज के नीचे जो डॉट है, इट रिप्रेजेंट्स ज एंड नॉट ज. सो दैट इज द डिफरेंस. बाकी और कोई फर्क नहीं. ठीक है. एनीथिंग एल्स? एनीबडी? ईश्वरा जी आपको कुछ डिफिकल्टी? No, sir. Thank you. Nothing for now. थैंक यू. गुड्डू जी आपको कुछ खास? नहीं, बस प्रैक्टिस करेंगे, बस ये वादा. बस आप नहीं, आप तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप तो पहले से ही आगे बढ़ चुके हैं. आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू फॉर बीइंग ए गाइड. आप तो सीनियर मोस्ट हैं इसमें. तो मैं तो मान लेता हूँ. मैं तो आपसे तो प्रेरित होते हैं सब लोग कि आप अगर सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते. यही मैं अपने आप को बोलता था जब मैं क्लास में आया ना. मेरे से छोटे थे, वो बोलते थे कि आप कैसे करते हो. मैंने बोला जब मैं 60 मैंने उन दिनों में 60 में 65 62 63 था. आज तो मैं 67 हूँ. अभी 5 साल हो गए. मैं बोला जब मैं 60+ में सीख सकता हूँ, तो आप तो सीख ही सकते हो. आप तो बच्चे लोग हो सारे. ठीक है. सो वी हैव टू एंजॉय स्टडी. एक ऐसा कोई है नहीं, ये नहीं है कोई एग्जाम देना है. व्हेन वी वांट टू लर्न समथिंग, तो सीख ही जाते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा टाइम लगता है किसी को थोड़ा कम टाइम लगता है. किसी को जैसे स्टूडेंट्स क्लास में 50 रहते हैं, फर्स्ट टेक आता है वो जल्दी जल्दी कर लेता है. जो लास्ट वाला वो भी पास होता है, लेकिन वो थोड़ा धीरे से करता है. नो प्रॉब्लम. सो वील ऑल गेट टुगेदर एंड वील ऑल कम फर्स्ट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. गुड जी. और मधुर जी आपको कुछ एनीथिंग स्पेशल? नो, नथिंग. उमेश जी एनीथिंग? ना महाराज, ठीक. सॉरी. थैंक यू. Thank you, Mara. Thank you for bringing out that mistake. We'll try to correct that. Now I am happy that somebody is pointing out that my presentation is not correct. That means that we are looking at every letter properly. Same thing जैसे उमेश जी ने बोला, same thing for all others. कि आप जब आप एक एक लेटर को देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ये कैसे लिखा होना चाहिए, या पढ़ेंगे वैसे, तभी आपको पता चले कहीं मिस्टेक है, वो भी पता करेंगे. और दूसरा, उसको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो. नहीं तो जो कश्मीरी पहले से जानता है, वो नोज हाउ टू स्पीक कश्मीरी, he will recite from his memory. He will look at the word, he will not see how it is written, and he will recite from his memory how it is spoken. I want you to read properly and also see how it is written. So because we are here to also understand how we can read properly and write properly. Thank you very much. Anybody else? Then otherwise we'll close today's session.
Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. गॉड Namaskar. ब्लेस यू ऑल। चलो सारे अपना उमेश जी आप अपना वो भेज दीजिए, पारुल को भेज दीजिए, मेरे को भेज दीजिए, या शिवानी को। आपका हम विल मेक श्योर दैट आपका लेसन बराबर अपलोड होगा। आपको डिफिकल्टी आई थी, कोई बात। वो कर सेंड। ओके, नमस्कार, नमस्कार एवरीबॉडी, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। सो